So after the stay in Mina, we go to the plain of Arafat. It is very important. The plain of Arafat is the most important part of Hajj, you can say. There is also, some people say that without Arafat, your Hajj is void. Yes. You Hajj had- is essentially Arafah. Essentially. Yes. Right. And when do we go to Arafah? We go to Arafat on 9th of Dhul-Hajj. So my dear, 9th Dhul-Hajj and the Yom Arafah is the most important part of Hajj. What you were trying to say is basically that it is the most important part of Hajj. So if someone misses this part, so obviously its Hajj would be void. So what is your opinion about what do we do on Arafah, the day of Arafah? عرفات کے دن ہم بہت عبادت کرتے ہیں. Like it's mainly عبادت. Like you go for dua, you read Quran, you do the same in Mina, but you do it more. Because on this day, یوم عرفات کے دن آپ کی ہر دعا, آپ کی ہر ذکر, آپ کا ہر نماز, آپ کا ہر قرآن کا لفظ, it counts so much. اتنا ایک افضل ترین دن ہے عرفات اس کا. دن اللہ تعالیٰ اتنے کائنڈ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ویسے always is merciful and kind, but اس دن اللہ تعالیٰ abundantly ہماری گناہ معاف کرتے ہیں, اور جتنے بھی ہماری گڈ ڈیڈس ہوتے ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں ریوارڈ میں. اچھا بچوں, مجھے یہ بتاؤ کہ جو تو حاجی ہیں, جو پلگرمس ہیں, وہ وہاں پہ موجود ہیں, تو جو ایک عام انسان ہے جو وہاں نہیں پہنچا, جیسے میں ہوں یا آپ ہیں, اور ہمیں بس پتہ ہے کہ آج یوم عرفہ, ہم کیا کر سکتے ہیں اس دن؟ عرفات کے دن ہم وہی عبادت کرتے ہیں. ہم وہی عبادت کرتے ہیں, ہم فجر پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, بہت دعا کرتے ہیں. تو بیٹا اس دن ہمیں بہت زیادہ اپنے لیے مغفرت مانگنی چاہیے, کیونکہ مغفرت از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر کسی کی مغفرت ہوتی ہے تو ہی از سکسیزفل ان دس دنیا اینڈ آخرہ ایز ویل. اور اس میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ اگر ہم 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتے ہیں, آپ لوگ رکھتے ہیں روزہ؟ ماما تو لازمی رکھتی ہوں. اچھا, اس روزے کی یہ فضیلت ہے کہ جب ہم یہ روزہ رکھتے ہیں 9 ذوالحجہ کا, تو اللہ تعالیٰ ہمارے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. وہ 2 سال کون سے ہیں؟ پچھلے 2 سال جو ہمارے کو, پچھلے 2 سال. اچھا, یہ ایک عبادت ایسی ہے اور یہ ایک روزہ ایسا روزہ ہے کہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس کے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں, لیکن آنے والا جو سال میں ہم نے گناہ کرنے ہوں گے, خدا نہ کرے, وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. سو دس از دا یونیک تھنگ اباؤٹ this particular day, this special day. So this is a unique thing about it. And what we can do staying at home, we can also plead that Allah Ta'ala please forgive us, forgive our parents, forgive all those relatives who are not in this dunya now, and all those Muslim ummah, mu'mineen, mu'minat, muslimin, muslimat جو آنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے. Whenever you pray for yourself, do pray for others as well. Yes, we should So this is the message of her. Yes, we should ask for forgiveness, we should ask for happiness, and we should definitely ask for mercy. We should ask for everything. Why not? Allah is king. He can give anything. And especially on this day, he is very, very, very kind. Allah is al-Ghaffar. Exactly. Yeah. And this is one of those days who are very dear to Allah Ta'ala. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ کسی اور دن میں کیے جانے والے اعمال عزیز نہیں, جتنے اس دن کے اعمال اللہ تعالیٰ کو عزیز ہیں. اور اس دن, ان 10 دنوں میں کیے جانے والے سارے نیک اعمال, and particularly on 9 ذوالحجہ, every good deed is extra rewarded, extra blessed. So we should never miss this opportunity of earning rewards, whether we are at Hajj or not. Even staying at home, you can earn the reward. On this day, Allah will forgive us on any sin. Allah will be merciful on us if we ask for truly mercy. repent. It is also important. Sincerely repent. If we sincerely and truly repent, and we promise that we will not repeat it. Yes, we should not do like this, that we made a sin, we are asking for forgiveness, but after Allah forgives us, we are gonna do that sin again. No, we should not do that. We may do that, you see, but we should not intend to do that again. Yes. There is a difference. Yes. You know, we are human, we can make mistake. But if you repent, keeping in mind that, okay, Allah is so merciful, He is going to forgive me,
I will do this again and again, I will repent. So this should not be the intention and should not be the Yes. niyat should be that I would sincerely refrain myself from doing this mistake again. So then Allah will inshallah be merciful, and Allah is merciful anyways, but as good Muslims and his true slave, we should have this intention. This is what we want our children to learn. We should do the most ibadat we can do on your Yawm Arafah. यानी हमें जितनी इबादत हो सकती है उतनी करें. और हाँ, अच्छा इबादत से बेटा आप क्या चीज लाइक यू थिंक इट इज इबादत? जिक्र, कुरान, स्पेशली आप समझ के तर्जुमे के साथ आप कुरान पढ़ें. उसका दैट इज वेरी गुड. बट बेटा इबादत सिर्फ ये जो इबादत है ना, ये हम अल्लाह के लिए करते हैं, बट अच्छे अखलाक, किसी के साथ अच्छे से ट्रीट करना, इस दिन आप स्पेशली किसी की हेल्प करते हैं. इस दिन आप स्पेशली किसी दुखी इंसान के साथ थोड़ा सा टाइम उसको खुश करते हैं. इस दिन स्पेशली आप अम्मी को खुश करते हैं. यू सी, अपने माँ बाप को प्यार से देखना भी एक हाजिर उम्रे का सवाब रखता है. तो आप स्पेशली अल्लाह की रजा के लिए वट एवर यू डू, यू आर डूइंग दिस टू प्लीज अल्लाह, राइट? सो इस दिन आप अगर हुस्ने मामलात भी करते हैं, यू नो, हुस्ने मामलात, गुड मैनर्स, अखलाक, तो अगर आप इबादत के अलावा जिक्र, नमाज, कुरान, रोज़ा, दिस इज इम्पोर्टेंट, बट डीलिंग विद ह्यूमन नाइसली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. Yes. सो जब ये काम भी आप इस दिन पे करेंगे तो ये भी इबादत काउंट होगी, और अल्लाह ताला इसको रिवॉर्ड भी करेंगे. और अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब हम अल्लाह के बंदों को खुश करते हैं. ठीक है? तो जो भी इंसान आपके डोमेन में आ रहा है, आपकी फ्रेंड्स, आपके बहन भाई, आपके मम्मी पापा, इवन योर हेल्पर्स एट होम, you can be kind to them, you can give something, you can do some sadaqa. See, हर छोटी छोटी चीज कुछ भी मैटर करती कुछ है. भी जो आप अल्लाह की रजा के लिए दे सकते हैं, यू नो, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस. एक स्माइल भी सकता है. यस. यू सी, तो इस दिन स्पेशली प्लान करें कि अगर तो हम वो लकी लोग हैं जो कि पहले से अरफा में मौजूद हैं, तो इससे बड़ा तो रिवॉर्ड कोई है ही नहीं. बट अगर हम इस दफ़ा नहीं बुलाए गए, इंशाल्लाह अगले साल बुलाए जाएंगे, तो हमें ये पैटर्न जो है कभी भी छोड़ना नहीं है. Yes, these small duas can make a very big difference. एग्जैक्टली. अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ. मुझे याद आ रहा है, मेरे एक स्टूडेंट थे, उनको पिक करने के लिए हमेशा उनके दादा अबू आते थे, और क्योंकि दादा अबू जो होते हैं उनको गुस्सा भी आता है, तो वो जब उसे पिक करने के लिए आते हैं तो कभी थोड़ी सी लाइक, यू नो, 5 मिनट्स लगते हैं अगर बच्चे को बाहर लाने में, तो हमेशा वो गार्ड पे बहुत गुस्सा करते थे, और वो आया जी पे भी गुस्सा करते थे, कभी कभी उस बच्चे पे भी गुस्सा कर देते थे. तो सब लोग उनसे बहुत डरते थे. तो फिर कुछ अर्सा ऐसा हुआ, वो कुछ अर्सा नहीं आए, और उसके बाद जब वो आए तो ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी स्वीट, हमेशा गार्ड को भी सलाम करते थे, अच्छे से मिलते थे, गुस्सा भी नहीं करते थे. तो मैं आया यूज्ड टू टेल मी दैट मैम ये अब गुस्सा नहीं करते हैं. तो मैंने कहा अच्छा, ये तो फिर अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि ये गुस्सा नहीं करते? सो वी डिसाइडेड, ऐसे सम टाइम, यू नो, पेरेंट्स फी के लिए भी आते हैं ऑफिस में, तो वो आए, तो मैंने उनसे ऐसी बात की, तो मुझे पता चला कि वो हज करके आए हैं. And he started sharing his journey, and he told me that I was in मैदान अरफा, और मैं जब मैदान अरफा में था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये रोज़े की आमद है, जज़ा और सज़ा का दिन है, मैं अल्लाह ताला के सामने हाजिर हूँ. तो जब मैं अल्लाह ताला के सामने हाजिर हुआ और मैंने अपने आप को परखा, जांचा और अपने बारे में सोचा, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि गुस्सा हराम है और अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, और मैं इतना गुस्सा करता हूँ, बिला वजह गुस्सा करता हूँ. तो मैंने अल्लाह से वादा किया कि मैं गुस्सा नहीं किया करूँगा. तो ये एक वो आदत है जो मैंने छोड़ दी है. सो आई वाज सो हैप्पी फॉर हिम. यू नो, समटाइम हमें एक बात मामूली लग रही है, लेकिन अल्लाह के लिए वो छोड़ देना कोई गलत चीज़, तो अल्लाह ताला कितना खुश होते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम दी स्पेशल डेज, कि हम इससे लर्निंग क्या लेके जा रहे हैं, हमारी लाइफ चेंज हो रही है या नहीं हो रही. सो दिस इज़ व्हाट वी शुड, यू नो, ट्राई. The root of the forgiveness is intention. Like if you are asking for forgiveness with true intention, like Allah, I will not make this mistake again, please. I may make this because we are humans, we are your creations, but I will try not to do it like Intentionally, exactly. Like we should not have the intention like we are doing a mistake. We ask Allah for forgiveness, and now we take advantage of the fact that Allah is merciful, and then we keep doing that mistake over and over and over again and asking for forgiveness. No, that is wrong. Amira, you're very right. But if you just, you know, you can change it a little bit, that, okay, Allah Ta'ala, I will not do this mistake again. I will not be, you know, angry with others.
but still I'm human, intentionally or unintentionally. If I make a mistake, you are there to forgive. That should be the spirit. And that should be the faith. And Allah loves it when we pray like this. Yes. When we show Him that we are weak and you are powerful. Yes. So it pleases Allah so much.